Hello, you're watching DD India and I'm Preeti. It is the day third when we talk of the third session of Pariksha Pe Charcha 2025. And today, Radhika Gupta, CEO Edelweiss, and Gaurav Chaudhary, also famous as Technical Guruji on YouTube, they will be sharing their experiences and will be interacting with students. Let's watch it. How do I have that dare to take challenges in life? हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? वॉरियर! आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या टेक्नोलॉजी आपका दोस्त है या दुश्मन? क्या टेक्नोलॉजी आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन को बेहतर बनाता है या टेक्नोलॉजी की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इसीलिए हम ये स्पेशल एपिसोड लेके आए ताकि हम ये सीखें कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपना एग्जाम बडी बनाएं। और इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे दो ऐसे कमाल की पर्सनालिटीज से जिनके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। आज जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनको स्टॉक मार्केट की हर चाल पता है। Join your hands together for CEO MD Edelweiss Mutual Fund, Radhika Gupta. Welcome to the show. Welcome. अच्छा, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको लोग गुरु कहते हैं, बट मुझे लगता है वो गुरु नहीं है, वो तो चलता फिरता गुरु कूल है। Boys and girls, join your hands together for Technical Guruji. गुरुजी का प्रणाम। वेलकम गुरुजी। परीक्षा पे चर्चा 2025 का ये टेक्नोलॉजी एपिसोड है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आजकल इतनी बात होती है, तो आज की कॉन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, लेकिन पहले बात करते हैं उस जमाने की जब टेक्नोलॉजी इतना हम पे भारी नहीं था। तो उन दिनों की थोड़ी सी यादें ताजा करते हैं। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन गैजेट जो आपको बड़ा कूल लगा कि यार ये क्या चीज आ गई? जो सबसे पहला, एंड ये बहुत पुरानी बात लगती है, वो फ्लॉपी डिस्क, वो जो बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती थी, और फिर सीडी आने लगे। एंड देन आई रिमेम्बर कि जब सीडी आए तो पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सबको याद है, बड़ी बड़ी किताबें आती थी। फिर वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीडी पे आता था, तो लगता था कि यार किताबें नहीं खोलनी पड़ रही, सारा ऑटोमेटिक, इतनी छोटी सी आ गई और हम सारा इजीली पढ़ सकते हैं। क्या बात है। मैं एक चीज आप सबको पहले बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि एक फ्लॉपी कैसी दिखाई देती है, तो जो आपके कंप्यूटर्स में सेव का आइकॉन होता है, वो आज भी फ्लॉपी के जैसा ही है। मैं जब आगे ग्रो कर रहा था तो मुझे घर पे पहला कंप्यूटर मिला। अच्छा। और वो कंप्यूटर मिला तो उस टाइम पे पापा ने केवल एक बात बताई कि इसमें केवल दो ही चीजें होंगी, या तो ओके और या कैंसिल। कुछ समझ में आ रहा हो तो ओके क्लिक कर दो, नहीं आ रहा हो तो कैंसिल क्लिक कर दो। कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी तो इंटरनेट डायल अप आता था, तो वो उसको इंटरनेट कनेक्ट करना और वो साउंड आता था, मोडेम होता था, अच्छा लगता था जब कनेक्शन हो जाता था। उसमें लाइट जलती रहती थी, आवाज आती थी, लोग दुआ करते थे कनेक्ट हो जाए यार। और जस्ट टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, आज की डेट में हमारे देश भर में 5G है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हमारे फिंगर टिप्स में है। उस मोडेम की जो स्पीड थी वो 56 kbps हुआ करती थी। तो जस्ट इमेजिन कि एक वेब पेज खुलने में वो 2 मिनट के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो वो 5 मिनट लगाता था और पूरा सस्पेंस, और फिर कभी कभी कैंसिल हो जाता था और पूरी नहीं आता था, बहुत गुस्सा आता था उस पर। आप दोनों अलग अलग फील्ड से हो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है और
कहाँ टेक्नोलॉजी को रोक देना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बहुत ज्यादा बना दिया है। मतलब मुझे वो टाइम याद है जब मुझे मतलब मेरे शायद 25-30 दोस्तों के सभी के जो घर के लैंडलाइन नंबर्स थे वो याद होते थे। ओवर टाइम हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है टेक के ऊपर कि हम भूलते जा रहे हैं वो चीजें, और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे हमारी स्किल सेट में एक कमी हमको देखने को मिले, हमारी मेमोरी तो कम नहीं हुई है, दिमाग की पावर तो उतनी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इतना। दूसरी मुझे लगता है कि अब एआई वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। एआई की मैं मदद लूंगा, एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा। अक्सर मैं देखता हूँ फ्रेंड्स के साथ में जब बैठते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं तो सभी को तुरंत उस टाइम पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है। मैं बोलता हूँ यार खाना ठंडा हो रहा है, उसका तो मजा उठाएं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा, हमारे स्किल्स ना अगर टेक ओवर कर ले, वो हमारा मास्टर बन जाए। मैं टेक को अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। मुझे जो लिखने का शौक है, सेंटेंस फ्रेम करने का शौक है, शब्दों से खेलने का शौक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए 800 वर्ड का ऐसे लिख दे। वो मैं खुद लिखना चाहती हूँ और मैं बार बार खुद को कहती हूँ नहीं, तो इससे ये काम नहीं करवाएगी, चाहे टाइम लगे, बिकॉज योर शार्पनेस, क्रिएटिविटी वो चली जाएगी। राधिका ने जो बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। इससे अच्छी क्वालिटी कहीं किसी कैमरा में नहीं है, कोई वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकता है। तो कैप्चर इट फ्रॉम हियर, दैट्स ट्रू। एंड इफ आई विल ऐड ये प्लस ये, एग्जैक्टली, तो किसी मोबाइल फोन में नहीं है। करेक्ट, आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ये 5 सेंसेस, ऑल द सेंसेस, यस। अब हम उस सेगमेंट में आगे जहां पे आप सवाल पूछ सकते हो। कौन पूछना चाहता है? मेरा सवाल ये है, हाउ कैन AI integrated into classroom to assist the teachers without replacing the human touch? It is crucial in education. देखिए, आई थिंक एक टीचर का रोल है टू प्रोवाइड विजडम, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस। जैसे एक इंग्लिश टीचर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है कि भाई अच्छी चीज़ कैसे लिखनी है, तो वो एआई के जरिए 2-3 अच्छी चीज़ें क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है। अगर एक टीचर आपको सिखाना चाहे कि एनालिसिस कैसे करना है, फॉर इंस्टेंस अगर एक 2 कंट्रीज का वॉर है, तो वो कह सकती है प्रॉम्प्ट डाल के कि इस सिचुएशन को आप इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए, इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए। ये एआई का एक बहुत अच्छा यूज है क्लासरूम में एनालिसिस दिखाने का। तो टीचर का रोल नहीं जाता, टीचर गाइड का रोल बनाती है, इंस्ट्रक्शन देने का रोल करती है, और एआई को अगेन स्लेव की तरह यूज करती है। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर एआई कोई गलत डिसीजन लेता है तो हम उसे कैसे, फिर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए? तो मुझे लगता है कि एआई को आप ऐसे समझिए कि एआई आपके पास में एक ऐसा असिस्टेंट है जो सारे काम जो आप चाहें वो कर सकता है, और वो सैलरी भी नहीं लेता है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप उतना ही उसको काम दीजिए जहां पे आपको लगता है कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो एआई आपको शायद ये बता सकता है कि अगर आपको साइंस और आर्ट्स में चूज करना है तो आप कौन से मुद्दों को देखिए। फैक्टर्स बता सकता है, इंफॉर्मेशन बता सकता है कि साइंस में कितनी प्लेसमेंट हुई है, आर्ट्स में कितनी प्लेसमेंट हुई है, लेकिन डिसीजन तो आप ही लेंगे। तो हमको एआई को उतनी पावर नहीं देनी चाहिए, और डिसीजन भी इनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी। जिम्मेदारी में अभी जब डिसीजन लिया ही है तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी। कह सकते हैं कि गलत डिसीजन लिया यार, एआई ने लिया, अब मैं क्या करूं? कुछ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सवाल पूछना चाहते हैं फ्रॉम आवर सीबीएसई स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब। मेरा प्रश्न यह है, एआई टूल्स शिक्षा को सरल और सुलभ बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तकनीकों के अत्यधिक उपयोग से छात्रों में सृजनात्मकता और गंभीर चिंतन के कौशल प्रभावित हो सकते हैं? हर चीज में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होता है, और टेक्नोलॉजी में भी मुझे लगता है एक बीच का रास्ता है। या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 60 सेकंड की रील बार बार देखते हैं। अगर आप 1-2 अच्छी चीजों को, 2 लंबे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, फिर वो देख के आप ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और लिखिए कि मैं तो ये खुद करती हूँ, मैंने इससे सीखा क्या, तो वो अब्सॉर्ब बेटर होता है। तो ये मिडल पाथ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बहुत जरूरी है। Awesome pearls of wisdom.
कमाल है। Can we have the next question, please? आज 24/7 सोशल मीडिया हमें कुछ न कुछ परोस रहा है, दिखा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल सोशल मीडिया में वास्तविकता, रियल व रील के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? मुझे लगता है रील को लेके तो एक बात आप सभी को दिमाग में जो है वो परमानेंटली स्टोर करनी चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग में केमिकल्स हिट होते हैं, असली के केमिकल्स, हम उसको बोलते हैं डोपामिन। जब भी आप कुछ देखते हैं, एक अच्छी सी आपको कुछ दिखी रील और तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहाँ पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया हुआ है और आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा या मेरा ट्रिप कब होने वाला है। एक फोमो हो जाता है बहुत बार। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वो फोटो एक खास तरीके से क्लिक करके पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम के लिए। मैं हमेशा वैसे नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमने टेक्नोलॉजी को रोस्ट किया, ठीक है? अब ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को दोस्त कैसे बनाए। राधिका, आपने डमशराज खेला है? हाँ जी। तो थोड़ा एआई ट्विस्ट का डमशराज खेलते हैं। ओह, एआई ट्विस्ट का डमशराज, थोड़ा मजा आएगा। तो क्या करना होगा? तो ऐसा करते हैं, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए। कौन खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा? चलिए यार, सब खेलना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मैं 2 बच्चियों को चुनती हूँ जो आगे बैठी हैं रेड जैकेट में। आप थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ जी। My name is Sneha. I'm from School of Eminence Shehata, Amritsar, Punjab. वाह। My name is Afia. I'm from Goa, JNV North Goa. वेरी नाइस। मैं आप लोगों को एक हिंदुस्तानी किरदार का नाम दूंगी। दमशराज में नाम देके आप बिना नाम बोले लोगों को समझाते हैं कि भाई ये नाम क्या है। इस बार आप बिना नाम लिखे एआई के जरिए उसकी एक ड्राइंग बनवाएंगे। समझ आया? करने को तैयार है? तो नाम नहीं लिखना है, कंप्यूटर को समझाना है कि ये कौन है। तो आपको जो नाम एआई को ड्रॉ करवाना है इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडियंस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को एआई को समझाइए बिना उनका नाम लिखे और देखिए क्या ड्राइंग आप बना पाते हैं। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही कमाल की स्किल है और टेक्निकल गुरुजी तब तक इन प्रॉम्प्ट्स के बारे में और थोड़ा हमें बताएंगे। देखिए, प्रॉम्प्ट्स अगेन हम अपना एक इनपुट दे रहे हैं, हम एक कमांड दे रहे हैं कि हम सामने से जो रिजल्ट है वो क्या और कैसा चाहते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक सीनरी बनाइए, अब मान लीजिए कि मुझे जो वो एक ड्राइंग चाहिए उसमें मैं स्पेसिफिक हूँ कि जो आसमान है वो नीले रंग का हो, लेकिन कुछ ऑरेंज हल्का सा एक शेड वहाँ पे आ रहा हो और थोड़ा थोड़ा पर्पल का भी एक वहाँ पे मुझे शेड मिल जाए। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर समझेगा प्रॉम्प्ट्स की मदद से। तो जब मैं टुकड़ों में अपनी बात कहता हूँ, बेसिकली यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आई थिंक ये लड़कियों का हो गया है, ये इशारा कर रही थी, हो गया है आपका? अरे देखें, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। वो क्या बात है। एक और बात, तालियां हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने ये परीक्षा पे चर्चा जैसा एक इनिशिएटिव किया और खासकर टेक्नोलॉजी जो एक इतनी अहम बात है बच्चों की लाइफ में, हम सब की लाइफ में, उस पे हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए भी तालियां। क्या बात है। तो अब गुरुजी आप थोड़ा सा बताएं इनको। अब मान लीजिए अगर आप घर जाके यही एआई शराड्स वाला गेम खेलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपको बिना कलाम सर का नाम लिखे उनकी एक फोटो चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं? हम स्टिल एआई को बोल सकते हैं कि हमें एक इंडियन इंसान की फोटो चाहिए जिसकी उम्र लगभग 65 साल होगी। हाँ। बाल थोड़े सफेद होंगे, सेंटर से बाल पार्ट होंगे, साइड तक आएंगे। यही सब चीजें अगर हम एआई को बताएंगे तो वो स्केच या वो जो इमेज है वो एआई हमको बना के देगा। यानी मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो किताब है एग्जाम वॉरियर्स, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और वहीं से एक चीज निकल के आती है कि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टीचर, एम्ब्रेस इट। मतलब ऐसे झप्पी जो है वो ले लो आप टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि जादू हो जाएगा। और जादू हो जाएगा। वो लिटरली जादू की झप्पी होगी। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गौरव। तो मैं आपसे चाहता हूँ 3 हैक्स कि कैसे बच्चे, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री बनाएं? देखो, स्ट्रेस टू बिगिन विद होना ही नहीं चाहिए, और यही अप्रोच के साथ में हमारे पीएम सर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया परीक्षा पे चर्चा का, जहाँ पे वो आप सबके साथ में कनेक्ट कर पाएं और जो एक हवा होता है, थोड़ा डर होता है, उसको थोड़ा दूर भगा पाएं। उसके अलावा एक चीज जो अक्सर हम चाहते हैं कि हम एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा जो है, मैं थोड़ा लाइट रखूंगा, वो ये कि टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। तो पढ़ाई आप कर रहे हैं, बीच में 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा अगर गेम खेल लें, या कई बार तो आजकल ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो गेम के स्टाइल में ही आपको जो है वो एग्जैक्टली आपकी जो पढ़ाई है वो एक गेम की तरह चलेगी। आपको सवाल आएंगे, आपके लिए टास्क होगा, आप लेवल्स अचीव करेंगे और गेम खेलते खेलते जो है वो आप कुछ नया सीख भी लेंगे। देखिए कितनी गजब की बात बोली टेक्निकल गुरुजी ने, और हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स। राधिका? तो मुझे लगता है एग्जाम के टाइम ये जो स्ट्रेस हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी आपका कम कर सकता है। तो जैसे आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट का, मैथ्स का या हिस्ट्री का बहुत बड़ा है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं कि वो सिलेबस कैसे आप मैनेज करें। टेक्नोलॉजी के जरिए आप सैंपल्स लिखवा सकते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है आज के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम लोग ना बहुत गधा मजदूरी का काम करते थे जो टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ज्यादा हम क्लास में, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता था कि हमारे पास में अच्छे नोट्स हमको कहीं से मिल गए। हाँ, ये सारा जो काम है ना, ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, जिससे कि आप अपना दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगाए। दैट इज वाई ऐसे आप टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाइए। स्लेव वाला काम आप उससे करवाइए और मास्टर वाला काम आप खुद करिए। तो पता है क्या समझ में आ रहा है कि हमको बॉस बनना है। और अच्छा बॉस तभी बनेगा जब आप इंस्ट्रक्शन अच्छे दोगे। जिस जो हमने प्रॉम्प्ट की बात की, मैं सीईओ हूँ, अच्छा बॉस आप तभी बनोगे जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सही दोगे। बिना इंस्ट्रक्शन दिए आप बॉस नहीं बन सकते। मैं तो एग्जाम अगर अगले दिन 11 बजे होता था, 6 बजे प्रीवियस दिन मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ। 8-10 घंटे सोए बिना आपका दिमाग अपने बेस्ट पे नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कहते हैं, स्लीप इज अ पावरफुल वेपन, शार्पन इट। कितना कुछ सीखने को मिला हमें, और इतनी सिंपल तरीके से। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग एक एक वर्ड में बताएं कि आपने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। मैंने ये सीखा कि टेक्नोलॉजी शुडंट इंटरवेन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। मैं ये सीखा एआई के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। सर, आई लर्नड दैट वी शुड टेक आवर ओन डिसीजंस। वाह, बी योर ओन एंकर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बी योर ओन एंकर। आप खुद अपने बल पे खड़े हो जाओ। और आपके असिस्टेंट्स कौन हो? यस, सुपर। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस and thank you for being such a wonderful panelist. Thank you so much, Radhika. Thank you to all of you. अच्छा राधिका जी, जाते जाते any message for our students? परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। गुरु जी, आपकी तरफ से कुछ गुरु ज्ञान जाते जाते? मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है परीक्षा पे चर्चा का, ये इतना एक यूनिक इनिशिएटिव है जो न सिर्फ स्टूडेंट्स को ताकत देता है, अभी हमें मौका देता है कि हम कनेक्ट कर सकें और कुछ अपनी बातें शेयर कर सकें। एंड ये सब चीजों के साथ में मैं बोलूंगा कि ये परफेक्ट फॉर्मूला है एग्जाम्स में सक्सेस का। Are you guys ready to be warriors now, exam warriors? Yes! Super, thank you! आफ्टर दिस सेशन मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली कि मैं एआई के जरिए अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें बेनिफिट्स, उन बेनिफिट्स को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कि टेक्नोलॉजी और एआई में ना हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना है, ना ज्यादा निर्भर रहना है, ना उससे अलग रहना है। कि हमें एआई को अपना मास्टर बनने नहीं देना, उसको अपना स्लेव बना के रखना। वॉरियर्स! आज हमारे गेस्ट ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें यह सिखाया कि टेक्नोलॉजी और एआई एक्चुअली हमारी परीक्षा, हमारी पढ़ाई के दुश्मन नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारा एग्जाम बड़ी बन सकता है, बस हमें उसे हैंडल करने का सही तरीका सीखना है। अच्छा, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप आइए ना नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर।
इस ऐप में एक सेक्शन है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। उसमें बड़ी कमाल की एक्टिविटीज हैं, उसको आप जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पे दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो मोदी मास्टर क्लास मिस मत करना। हम आपको यूं ही एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने वाले सुपर टूल से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे और नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाएंगे। मीनवाइल आप तैयारी करते रहिए, टेक टूल्स का सही इस्तेमाल करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, laugh in, laugh out. So that was the third session today of Pariksha Pe Charcha. 2025 marks the 8th edition of Pariksha Pe Charcha by the Prime Minister. And today, in this third session of Pariksha Pe Charcha 2025, we had guests. We had Radhika Gupta, CEO, Edelweiss, and we had Gaurav Chaudhary, who is also famous as Technical Guruji on YouTube. Now, both the guests talked about their journeys and also how technology is a very important part of our lives. But they also talked of how we need to be the boss and not be slaves to technology. This was a very important point both of them put forward to the students, and the students also participated. And in a nutshell, the session talked of how technology can be used as an exam buddy. So that was about Pariksha Pe Charcha. Up next, we'll get to the news that we're tracking this hour. We'll talk of Prime Minister's US visit. After wrapping his France visit, India's Prime Minister Narendra Modi arrived in the United States on Wednesday for a 2-day visit. This is Prime Minister Modi's first visit to the US after Donald Trump assumed office for the second term as the president. This is also the second leg of his two-nation visit. This also marks his first visit to the US since President Donald Trump's second term inauguration. The trip aims to strengthen India-US relations, focusing on key areas such as technology, trade, defense, energy, supply chain resilience, and global security challenges, highlighting the depth of the bilateral partnership. Prime Minister Modi will be staying at the Blair House, the historic guest lodging for dignitaries visiting the White House. During his 36-hour stay in the US, Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with President Trump. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to the US since Trump was sworn in for his second term, and places him among the select few foreign leaders visiting Washington within weeks of the new administration's inauguration. Prime Minister Modi is the fourth foreign leader to meet Trump in the White House in less than a month after he took office for the second term. He will also meet several members of Trump's cabinet, as well as US business leaders and members of the Indian American community. Prime Minister Narendra Modi received warm welcome from the Indian diaspora. Members of the Indian community waited at the hotel to have a glimpse of Prime Minister Modi. Despite the chilly weather, members of the Indian community gathered outside the hotel, chanting Modi, Modi, and waving Indian flags to greet him. Prime Minister also reciprocated, waving his hand to the people and talking to the members of the Indian community. अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा। ये कहें कि विश्व का सब कुछ मिल गया। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया देख के मोदी जी को। बहुत बढ़िया है, हमें उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इतना थक गए थे तो भी उसने टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने और बहुत अच्छा लगा हमें। We were waiting for him, so we got to see him very close. So I really am liking it. Like see him so close, it is really nice. It's all worth it. Like 5 hours we are standing in this weather. It's freaking cold and you're freezing, but it's all worth it. Just one glance of him and he's so nice. Like, you know, we just love him. Indians are the biggest foreign student group in the United States. They form an important part of people-to-people linkages between the two countries. DD India Shubhendu Ghosh speaks with some Indian students in Washington, D.C. to learn about their aspirations and concerns and their expectations from Prime Minister Modi and President Trump talks.
One of the hallmarks of India-United States relationship is the people-to-people connect. Some 3.3 lakh Indian students are studying here in America. In fact, I have with me a couple of bright students from the prestigious Georgetown University in Washington, D.C. Anusha and Amrendra. Welcome both of you to DD India. First, I'd like to learn from you. Give us a sense of what it is like for Indian students to come here in America. Coming to America is certainly a very transformative experience, and for someone like me who's a student who also came along with her family, so I would say that it was an enriching experience for my children as well, who started going to their preschool and school here in America. But it also comes with its own challenges. Maybe, navigating the different visa policies or, the changing uncertainties that come along with it. What can you tell us about your experience of being here, studying here? Regarding all these visa policies and everything is changing. So I would have preferred a little bit more stability and a little bit more, certainty of what is going to happen next. That would have given me more peace of mind. Right. The thing about policy uncertainty, Anusha, you mentioned, if you could also give us a sense of the manner in which it is impacting your plans for the present and the future? So I would say that in terms of policy uncertainty, I would perhaps touch on the H-1B system. I personally would want to see it more merit-based. Students who have high-income jobs lined up in some of our cases would want our critical thinking skills to be at the forefront, or US work experience to be at the forefront, rather than having these very unpredictable things. Prime Minister Narendra Modi is going to be here holding talks with President Donald Trump. There's going to be the first meeting between the two leaders as the new administration has come into power. As young Indian students studying here in America, any message for the two leaders as they sit together, hold talks? Try to get some reforms in the green card processes. Try to recapture whatever you can. Make it more merit-based, talent-based. Make it predictable, talent-driven, merit-driven. I would also say that make it easier for some of his students who want to pursue entrepreneurship as well. These young students, Indian students in America, talking about their expectations as Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump hold talks to take towards the future, talk about the future of India-US partnership. With camera person Jaishankar, Shubhendu Ghosh for DD India in Washington, D.C. And now we tell you, and in fact show you some visuals as Prime Minister Modi begins his US visit, where he received a warm reception in a chilly winter evening. All right, DD India's Amritpal Singh joins us from Washington, D.C. Amrit, what will be on the table when the two leaders meet and hold talks? The entire spectrum of the relationship, when the two leaders meet at the White House, they would be looking at trade, investment, economy, defense ties, energy partnership, security partnership, the strategic partnership, the comprehensive global strategic partnership with a focus on the Indo-Pacific. As you know, India is hosting the Quad Leaders Summit this year. That would be key on the agenda. Immigration would be key on the agenda. There are issues on which there are convergences, so the effort would be to build on those convergences. On issues where there are divergences or which require realignment or reset or readjustment, say issues like tariffs,
the two sides would openly talk about that. The White House press secretary made a statement saying that reciprocal tariffs could be invoked by Donald Trump on countries, though she did not name the countries. Of course, there are concerns in India about it, though India has not been named right now, but there are concerns. So I think the two leaders will be openly talking about that. Prime Minister Modi will be conveying to Donald Trump that India understands your tariff diplomacy, but India is ready to make concessions, but the areas can be explored where a win-win situation can be evolved. If India makes concessions on few areas, India would want the scope and the ambit of the relationship to grow in terms of the trade, so that the overall impact can be eased on both countries, because the idea is to do that in the context of the wider relationship that the two countries share. They are strategic partners, they are democracies, they are on the same page when it comes to a lot of global issues. So if the balance of trade is an issue for the Americans, or if Donald Trump's America First or Make America Great Again policy requires him to take certain steps, India understands that. But that does not necessarily come in conflict with, say, Make in India. Avenues can be explored where it can be mutually beneficial, where the expertise that they have, that expertise can be deployed here. Those technologies can be transferred. On immigration, India does not support illegal immigrants or immigration, so India is ready to take back illegal immigrants that the United States might want to send back. But on H-1B visas, India has a talent pool, and American economy requires that. So I think the two leaders would be talking in an environment which will be progressive, which will be conducive to friendly ties between the two countries, and finally evolve an approach which is a win-win approach. All right, Amrit, what are the other engagements of Prime Minister Modi in the US apart from meeting Donald Trump? That's right. His first bilateral meeting was with Tulsi Gabbard, who just got confirmed as the Director of National Intelligence, though Tulsi Gabbard has been an India supporter all through. Of course, the issue of illegal migration would have figured in the talks between the two sides, between Prime Minister Modi and Tulsi Gabbard, and his other meetings you mentioned, Elon Musk, though there is no official confirmation as of now. But yes, apart from the Dodge chief, he's also a business leader. The other meetings could be with cabinet members of Donald Trump's administration, but also, business leaders, where Prime Minister Modi would, convey that India, given its growth story, given the growth opportunities and the business opportunities that India offers, it is in the interest of both countries and businesses from the United States to invest in India and gain or benefit from the opportunities that a growing India offers to the world, and not necessarily at counter purposes. So I think he shall be putting out during his bilateral meetings that the idea should be to explore areas where the two sides can cooperate and not be at cross purposes. All right, Amrit, thank you for joining in with those details. And in his first bilateral meeting, Prime Minister Narendra Modi met the freshly appointed US's Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, in Washington, D.C. On social media platform X, Prime Minister Modi congratulated her on her confirmation and discussed various aspects of the India-US friendship with her, of which she has always been a strong votary. And talking about Prime Minister's visit to France, collective global action on artificial intelligence dominated Day 2 of India's Prime Minister Narendra Modi's France visit. Day 3 was not just about cultural linkages and people-to-people connect. It also focused on strengthening economic and maritime ties with focus on sustainable and limitless clean energy for the future. Let's take a look. After a power-packed Day 1 in France,
Indian Prime Minister and French President yet again scripted history in Marseille. Both the leaders jointly inaugurated the Indian consulate in this vibrant city, marking a new chapter in India-France ties. At the consulate, both the leaders were warmly welcomed by members of the Indian diaspora who had gathered to witness this historic occasion. Both the leaders also visited the Mazak War Cemetery in Marseille and paid tribute to the Indian soldiers who lost their lives during the First and Second World War. Both leaders laid wreaths to honor the sacrifices of the fallen soldiers. Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron then visited the International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER, in Cadarache. Both leaders appreciated the progress of ITER, including the assembly of the world's largest tokamak, where 500 megawatt of fusion power will be produced. India is among the 7 ITER members contributing to the project over the last 2 decades. Focus was also on strengthening maritime ties. Both leaders visited the control room of CMA CGM, a French shipping and logistics company in Marseille. The two leaders held discussion on future collaboration through the India-Middle East-Europe Economic Corridor, which was launched during India's G20 presidency. As Prime Minister Narendra Modi's productive visit to France concludes, he emplained for his visit to the United States, where he will be holding talks with President Donald Trump. Prime Minister Modi was accorded a military farewell in France. In a special gesture, French President Emmanuel Macron came to see off Prime Minister Modi at the airport, showcasing once again a never-ending bond between both the two leaders. Jessica Taneja's report for DD India. You're watching DD India News Hour. We're heading for a short break. But after the break, over 43 crore devotees take the holy dip at Mahakumbh 2025 in Prayagraj as pilgrims continue to flock to the sacred Trivedi Sangam. Clean energy is the future for sure. We are still not able to produce enough energy through renewable sources yet. But why is it so, and how can we change that? We introduced solar-powered street lights, cutting consumption by 5%. Then I had the government build green homes fitted with solar panels, making us more energy independent. The panels contain a lot of rare commodities, and you can save a lot of energy if you use recycled materials. We run off hydropower or wind power, so the electricity we have is sustainable and renewable. So of course that's the most sustainable we can do. When it transforms and translates into results that is tangible, they can see the difference that it makes to their environment. It's a huge thing. Welcome back after the break. You're watching DD India News Hour. A quick relook at the top stories now. After wrapping his France visit, India's Prime Minister Narendra Modi arrives in the US to meet President Trump. Trade, tariffs and more to dominate the talks. After confirmation by the Senate, Republican Tulsi Gabbard, sworn in as US Director of National Intelligence, meets Prime Minister Modi in one of the first engagements after taking charge. With peace on agenda, Trump calls Putin and Zelensky, says negotiations to end Ukraine conflict will start immediately. US President Donald Trump to announce reciprocal tariffs on Thursday as trade war fears mount. And India completes an emphatic whitewash of England in a 3-match home ODI series just ahead of the start of the Champions Trophy. Tulsi Gabbard was sworn in as the top US spy on Wednesday with Republican support behind a nominee once considered one of President Donald Trump's most controversial picks. A detailed report ahead. Do you solemnly swear? I, Tulsi Gabbard, do solemnly swear that I will... Tulsi Gabbard was sworn in as the top US spy on Wednesday. At the swearing-in ceremony, US President Donald Trump praised Gabbard
and also entrusted her with overseeing urgently needed reforms to the US intelligence community to protect the rights and the civil liberties of all Americans. Faith and allegiance to the same. Tulsi Gabbard's an American of extraordinary courage and exceptional patriotism. She's devoted her entire life to public service, and I've watched her for years on different shows and everything. I said, she's a woman of great common sense, and, you know, we like the common sense. In response, Gabbard expressed her commitment to focus on ensuring the safety, security, and freedom of the American people. So I look forward to being able to help fulfill that mandate that the American people delivered to you very clearly in this election, to refocus our intelligence community by empowering the great patriots who have chosen to serve our country in this way, and focus on ensuring the safety, security, and freedom of the American people. Tulsi Gabbard left the Democratic Party in 2022 to become an independent before finally backing Donald Trump and joining the Republican Party in 2024. She has served 4 terms in the House of Representatives. She will now lead an agency established after September 11, 2001 terror attacks to coordinate US's intelligence operations, one of the most critical national security roles in the US government. Earlier, the Republican-controlled US Senate confirmed Tulsi Gabbard as Trump's choice to lead the country's intelligence services. Gabbard scraped through a 52 to 48 floor vote. Gabbard had looked vulnerable, but 3 Republican holdouts finally ended up lying behind her. Bureau Report, TD India. US President Donald Trump made phone calls to Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky as part of the efforts to resolve the Ukrainian conflict. Trump directed officials to begin discussions aimed at ending the conflict, marking a significant step in the diplomatic efforts. A report ahead. Donald Trump's calls to both Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in separate phone calls on Wednesday as efforts to end the Ukraine conflict gained traction. The US president has set the ball rolling as he instructed officials to begin talks on ending the conflict. Trump said Putin wants the war to end and they discussed getting a ceasefire in the not-too-distant future. The Kremlin earlier said Putin and Trump had agreed to meet. Trump said their first meeting would probably take place soon in Saudi Arabia. Trump announced that Secretary of State Marco Rubio, CIA Director John Ratcliffe, National Security Advisor Michael Waltz, and Middle East envoy Steve Witkoff could lead negotiations on ending the war. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Trump and Zelensky spoke after Trump's call with Putin. The development followed announcement by U.S. Secretary for Defense Pete Hegseth that Kyiv would have to give up its long-held goals of joining the NATO military alliance and regaining all of its territory seized by Russia. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. European powers, including Britain, France, and Germany, said on Wednesday they had to be part of any future negotiations on the fate of Ukraine, underscoring that only a fair accord with security guarantees would ensure lasting peace. Rubio and Vice President J.D. Vance will hold talks on Friday in Munich Security Conference. Bureau Report, DD India. All right, let's get to other updates now. US President Donald Trump plans to announce reciprocal tariffs on every country that charges duties on US imports in a move that ratchets up fears of widening global trade war and threatens to accelerate US inflation.
The president has already stunned markets by announcing tariffs on all steel and aluminium imports beginning on March 12th. Now, that drew condemnation from Mexico, Canada and the European Union, while Japan and Australia say that they were seeking exemptions from the duties. Last week, Trump imposed an additional 10% tariff on Chinese goods, effective from February 4th, with Chinese countermeasures taking effect this week. He delayed a 25% tariff on goods from Mexico and Canada until March 4th to allow negotiations over steps to secure U.S. borders and halt the flow of the drug fentanyl. I was just with the president in the Oval Office, and I can confirm that tomorrow, the February 1st deadline that President Trump put into place at a statement several weeks ago continues. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have sourced and allowed to distribute into our country, which has killed tens of millions of Americans. These are promises made and promises kept by the president. A U.S. judge allowed Donald Trump's administration to carry out its federal worker buyout program as the Republican president moves to overhaul and downsize the U.S. government, handing a setback to the unions trying to stop the plan. The decision could clear the way for the Trump administration to swiftly try to wrap the program up, though the unions could ask another court to halt the program. U.S. District Judge George O'Toole in Boston dissolved an earlier order he issued that had paused the program at the urging of unions representing more than 800,000 federal employees, concluding the unions lacked legal standing to challenge the rule. Trump, who began his second term as president on January 20th, has appointed Elon Musk, a special government employee, to oversee a sweeping effort called the Department of Government Efficiency, with the stated aim of reducing federal budget spending and reshaping the United States' 2.2 million strong federal workforce, potentially purging thousands of workers. As Hamas suspended the release of Israeli hostages, relatives of hostages held in Gaza pleaded with the U.S. Congress to back President Donald Trump. The relatives of the hostages believe that Trump's capability of bringing lasting peace to the West Asia is important. The move by Hamas can escalate the existing tension in the region. Concerns that the truce will collapse are growing as fury mounts in West Asia over President Donald Trump's plan for the United States to take over Gaza, resettle its Palestinian inhabitants, and build an international beach resort. I think there are multiple areas that Congress can help. Probably the most important is to support President Trump administration in their efforts to bring our loved ones back home. We have to work, all of us together, and to know that we have to change the strategy as well, and to give a legitimacy strategy. I believe President Trump wants to and capable of bringing lasting peace to the Middle East. He understands that the only path forward is the immediate release of hostages. Israeli Defense Minister Israel Katz said that if hostages are not released by Saturday, there is no ceasefire and the conflict will resume. If Hamas does not release the Israeli hostages by Saturday, then the gates of hell will open upon them, just as the President of the United States promised. I came here today to ensure that the IDF is properly preparing to renew the war in Gaza. The entire ceasefire agreement with the Hamas murderers was intended to bring about the swift release of the Israeli hostages who are being held in grave conditions in Gaza, and for that, Israel has agreed to pay a heavy price. If Hamas stops the hostage release, then there is no agreement and there is war. Tensions are escalating in eastern Congo as Congolese commandos pursue M23 rebels near Ilusi. The Rwandan-backed group continues its advances after seizing Goma last month. The footage showed soldiers moving cautiously. Their commander, Colonel Jarabu, urges them to hunt the enemy down and reclaim the lost ground. The military confirms its forces in Ilusi came under attack on February 12th. UN sources say M23 now controls the town, threatening to march to Bukavu, a key strategic city. With thousands killed and over 1 million displaced since 2022, the crisis deepens.
While Goma remains calm under M23 rule, civilians are fleeing camps after rebels ordered evacuations. And back home, we'll get you more on the Parliament proceedings. The new income tax bill announced by India's Finance Minister Nirmala Sitharaman during her budget speech on February 1st is likely to be tabled in the lower house or Lok Sabha on Thursday during the budget session of the Indian Parliament. The new income tax bill aims to replace the 60-year-old Income Tax Act of 1961. Once passed, the proposed legislation will be called the Income Tax Act 2025 and is expected to take effect in April 2026. Whereas in the upper house, the Indian Parliament or the Rajya Sabha, the debate on the union budget will conclude. All right, our correspondent Anil Thomas joins us from Delhi. Anil, good morning. Now, we've told our viewers about what all is to be taken up in both the houses. You tell us, how do we expect the day to pan out? Apart from this, what else legislative business is lined up? Well, good morning, Preeti. Well, it's the last day of the first half of the budget session of Parliament. And many would expect this last day to be, not having much of business. But you look at the Lok Sabha business that's been listed, almost 50 pages of legislative work that needs to be done. There are many private members' bills that would be introduced in Lok Sabha. There's the Waqf Board report that will be today tabled in Parliament. You mentioned about the new income tax bill. That's going to change the dynamics. It's going to become more reader friendly. And it's almost got 23 chapters, around 622 pages that report has. But that's something that we need to look forward to. Also, in the upper house, there is a deliberation that's still going on the union budget. We saw the finance minister reply on the union budget in the Lok Sabha, but in the upper house, the reply is still left. So we would expect, there is expectation that today, later part of the day, tentatively around 4 o'clock, we'll have the union finance minister speak on the union budget there in the upper house. But all in all, it's been a productive session, the first half of the budget session, though short in time, just 9 working days that we had. But it's been very productive for the government, purely in terms of 2 bills being introduced, a lot of discussions, deliberations, almost 15 hours dedicated to the union budget, 15 hours dedicated to the motion of thanks to the president's address. All in all, a productive one, in both houses of Parliament that the Treasury benches have enjoyed. All right, Anil, thank you for joining in with those details. And from here, we now turn focus to Mahakumbh, the largest religious congregation in the world. The Mahakumbh 2025 in Prayagraj has drawn an overwhelming number of devotees to the sacred Triveni Sangam, the confluence of Ganga, Yamuna and the mystical Saraswati rivers. With unwavering faith and devotion, more than 48 crore pilgrims have already taken the holy dip, seeking spiritual purification with blessings. With 13 days left for the grand event to conclude, officials anticipate that the total number of pilgrims could surpass an outstanding 50 crore. Even after completion of the 3 main Amrit Snans, Makar Sankranti, Mauni Amavasya and Basant Panchami, the enthusiasm of the pilgrims remains undiminished. People from across India and the world continue to arrive daily, making the Mahakumbh a global spiritual phenomena. The Mahakumbh 2025 is not just a religious gathering, but a reflection of the rich spiritual heritage and enduring faith of millions. As the sacred waters of Triveni Sangam witness history, the event continues to inspire devotion, unity and cultural pride. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav, along with officials, reviewed the crowd management situation of Prayagraj railway stations in a war room at Rail Bhavan. The minister instructed officials to ensure that trains are made available for pilgrims in all directions. He also mentioned that the Prayagraj division has been directed to run extra trains as needed to ease passenger congestion while ensuring passenger comfort in the holding areas. All right, our correspondent Dibendu Mondal joins us from Prayagraj. Dibendu, good morning. We tell our viewers about the overwhelming attendance of devotees there in Prayagraj. Another 13 days for the Mahakumbh to end. What are you witnessing there? It's a Thursday morning. Tell us what you see around yourself. Well, good morning, Preeti. Yesterday we had the Maghi Purnima Snan at Prayagraj, which saw millions of devotees from across India coming to Prayagraj, taking that holy dip. The long, arduous journey of faith to the Sangam did take place yesterday. But what we are witnessing today is, of course, much thinning of the crowd, which after the
holy dip of the Maghi Purnima are making their way back to their respective hometowns. We have seen how roads were crowded last night, how the railway stations were being crowded because people were making their way back to their homes through the railway stations and through the roads that leaves Prayagraj. So of course, the government do expect that till the 26th, there will be a huge influx of people coming in and going out, taking that holy dip at the Holy Sangam. So, of course, the situation here, as far as the security aspect is concerned, the administration is taking all adequate measures to ensure that the smooth crowd management, and also to ensure that all the devotees that are coming from across different parts of the country doesn't have to face any trouble. They are guided to their respective, through the respective routes to the Sangam. And of course, it is expected that, in fact, Preeti, yesterday, more than 1.84 crore people did take that holy dip. And it is expected that over the next 10 days, it could be another 1.5 to 2 crore people taking that holy dip till the Mahashivratri, which concludes the Mahakumbh Mela. There could be more than 50 to 60 crore people already taking that holy dip. Preeti. All right, Dhimendra, we leave it here. Thank you for joining in with those details. And from here, we now turn focus to sports. India completed a commanding 3-0 clean sweep over England with an emphatic 142-run victory in the third ODI at Ahmedabad. Batting first, India posted a formidable total of 356 runs, with Shubman Gill leading the charge with a century. Virat Kohli and Shreyas Iyer contributed crucial half-centuries in their final outing before the Champions Trophy. In response, England managed to score only 214 runs as Indian bowlers delivered a collective masterclass. Arshdeep Singh, Harshit Rana, Akshar Patel and Hardik Pandya took 2 wickets apiece, while Kuldeep Yadav and Washington Sundar bagged 1 wicket each. That's it in this edition of DD India News Hour, but let us know your thoughts on the news of the day. For those of you on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on the DD India mobile app. This app is available on both Android and iOS platforms, and you can download the respective QR codes. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Preeti Kaur signing off, and from all of us in Delhi, thanks for watching DD India News Hour.